नेक्स्ट हम क्लॉजेस डिस्कस करेंगे एडवर्ब की, ठीक है, एडजेक्टिव की एंड नाउन की. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट विद इन अ ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लॉजेस. जिन सेंटेंसेस में या जिन वर्ड्स जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके अंदर हम प्रेडिकेट्स, ठीक है, विद इन अ ग्रुप, अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स विद इन अ ग्रुप हम यूज़ कर लें तो वो क्लॉजेस कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, बेसिकली वो क्लॉजेस हैं. ठीक है, टुडे आई हैव सीन द फिल्म विच वॉज रिलीज्ड यस्टरडे. सो हेयर which was released, that's a clause. Okay, so this is my favorite dress which I prefer to wear during festive occasions. तो यहाँ पर which I prefer to wear during festive, ये क्या है यहाँ पर clause. So in the above sentences there are two parts, like in each part there is a subject and a predicate. यहाँ पर subject है और predicate है. In short, a clause contains a subject and a predicate, but the phrase doesn't contain a subject and a predicate, but both the phrase and the clause form parts of a sentence. We have already seen that a clause is a group of related words containing subjects and a predicate. For example, I went to my college is just one clause, and I met my schoolmate at a village, one clause. Okay, so इनको हमने जब हमने ऐड किया है with the help of comma, so ये क्या हो गए हैं, two clause. The sentence one as well as second, there is a subject and the predicate, and the clause stands as complete sentence. तो टू क्लॉज को हमने ऐड करके कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट किया है. ओके, सच क्लॉज आर कॉल्ड एज मेन क्लॉज इन द सेंटेंस. Third, there are two clauses. When I went to my college is a clause and there is a subject and predicate. तो इसमें subject और predicate है. The other clause is a sentence is I met my schoolmates. So the first noted clause doesn't stand independently as a sentence, but the second noted clause stands independently as a sentence. As such, the first noted clause is a subordinate clause and the second noted clause is a main clause. So one more example is given below to the differentiate a main clause as and a subordinate clause. I went to the market where I purchased fruits. So here I went to the market, main clause, यहाँ पर I went to the market जो है वो यहाँ पर main clause है. So I purchased fruits यहाँ पर subordinate clause है. Okay, so subordinate clause in a sentence are divided on the basis of the function as noun clause, adjective clause, and third one is adverb clause. Okay, next one is adverb, the subordinate clause that functions as an adverb in a sentence is called an adverb clause. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ही टेक्स मेडिसन बिकॉज ही इज़ इल. यहाँ पर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लोज से. ओके, सो यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, वो फंक्शनलाइज हो गया है एडवर्ब क्लोज में. ओके, सो ही कांट सी अनलेस ही वियर्स ग्लासेस. ठीक है, उसने ग्लासेस वेयर किए हुए हैं बट फिर भी वो नहीं देख सकता. सो इस यहाँ पर अनलेस ही वियर्स जो वर्ड हैं यूज़ किए गए वो एडवर्ब क्लोज है. ओके, सो आई एम सो बिजी दैट आई कांट टेक पार्ट इन द पार्टी. Okay, the fourth one is also an example of these. Unless you study well, you can't get high marks. Fifth one is we shall miss the train if we don't rush up by engaging a taxi. Okay, so next one is adjective, a subordinate clause that function as an adjective in a sentence is called an adjective clause. For example, my friend got a job in the town where he had his education.
ओके, कि मेरे दोस्त ने वहाँ पर अपने कस्बे में जॉब हासिल की है जहाँ पर उसने तालीम हासिल की थी, ठीक है। द प्रोफेशनल कोर्स विच आई कंप्लीटेड हेल्प मी टू गेट अ जॉब। ओके, सो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है विच आई कंप्लीटेड, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक विच आई परचेज्ड इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन एग्जाम। विच आई परचेज्ड यहाँ पर क्या है? Adjective clause. Okay, so I always prepare to wear dresses which gives a decent look. So here which gives a decent look, that's a words which is expressed an adjective clause. Okay, so noun is a clause is a dependent clause that acts as a noun. नाउन क्लॉज क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक्ट करती हैं डिपेंडेंटली. इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, फॉर एग्जांपल लाइक सब्जेक्ट complement or a positive. Noun clause begins with the words such as how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, how, however, whom, ever, and why. Okay, so we will discuss examples in the next video. Take care. Allah Hafiz.